The next chapter is basically the elementary fluid dynamics. The title of the chapter is elementary fluid dynamics, and it is chapter number 3 of your book. In this chapter, we should be talking about basically the aim of this chapter is to develop the Bernoulli equation. So we'll be discussing different assumptions and restrictions on the development of the Bernoulli equation. We will be discussing what is streamlines and what is the streamline coordinate system, and then we'll be driving the Bernoulli equation. So based on the derivation of the Bernoulli equation, we'll be discussing different types of the pressures involved or the different terms involved in the Bernoulli equation. And we will discuss about the energy grade line, hydraulic grade line, how it is drawn, what does the energy grade line mean, and what does hydraulic grade line mean. And then we'll discuss different applications of the Bernoulli equation on different flow situations, different daily life applications or the flow situations we encounter daily. So this is the basically outline of this chapter. And if we talk about just a little bit introduction to the Bernoulli equation, Bernoulli equation is the most simplistic equation that can be used to describe a fluid in motion. The most simple or the most usable equation which can easily help you to understand any flow situation is the Bernoulli equation. But as it is the most simple equation, so whenever there is a fluid in motion, people always think that it can be solved using the Bernoulli equation, or if we apply Bernoulli equation, we will get all the information related to this flow situation. That is why it is the most used and abused equation in fluid mechanics. Every flow situation cannot be modeled using Bernoulli equation. Although it is the most simplest equation, it can give you an idea about most commonly encountered flow situations, but it cannot be always used for all the flow situations because there are some limitations on the use of Bernoulli equations. And these assumptions and restrictions are applicable to flow situations where the Bernoulli equation can be applied. That is the flow for on which the Bernoulli equation should be applied should be inviscid flow. That is, the viscosity should be zero. The flow should be assumed as inviscid flow. The flow should be steady flow. We will discuss in just a few moments after that what is inviscid flow, what is steady flow. The paths traveled by the small sections of fluid are well defined. That is, the flow path is well defined. The flow is incompressible. That is, the density of the fluid or the density of the flow is constant. It does not change with time. So these are the assumptions that should be kept in mind while applying Bernoulli equation. If your flow situation or if your problem is based on these assumptions, it satisfies these assumptions, then you can use Bernoulli equation. So you cannot always use Bernoulli equation for all the problems encountered. So is it clear what are the assumptions for using Bernoulli equation? Yes, sir. Yes, sir. So we will discuss a little bit about streamlines and the steady flow, what is it and how we model it. So in general, we always consider the flow. In dynamics, you would have studied about flow of a particle or motion of a particle, right? Have you studied about the motion of a particle Yes, sir. in dynamics? So then you should have no difficulty in understanding the fluid particle motion. Generically speaking, what we do is we always consider that the particle is traveling in 3 dimensions. The motion of the particle is 3D, and for that we use x, y, and z coordinates. This is the x coordinate in fluid. We have assumed that our coordinate system would be like this, and if the particle is here, we would need 3 coordinates to define its position, and that is x, y, and z. So the particle would be considered in 3 dimensions. The motion of the particle would be 3-dimensional motion. But most of the flow situation which we will be encountering in this course as well as in generically in daily life problems would be 2-dimensional situations, or these 3-dimensional situations which we will encounter can be modeled as 2-dimensional situations. So most of the times we will be encountering 2-dimensional flow patterns. So what we will do, we will just assume that our flow for the course of this chapter is 2-dimensional flow. So we'll always be concerned with
XZ system. We will be considering flow in XZ plane. It can be in XY plane, it can be in YZ plane, but it will always be a 2D problem. It will be a two-dimensional problem. Clear? Yes, sir. So my question to you is that if we have a two-dimensional particle motion, can you tell me how the path of that particle is defined? Or how do you draw the path of a particle? On which variable that path is dependent? Time, If the particle is not moving, then how it is dependent on time? position, Change of position with respect to time. That how will you define the path of that particle, right? yes, sir. So basically change in position with respect to time is, Velocity, so velocity is responsible for defining the path of the particle. For example, at some instant we have particle at position 1 and it is moving with velocity v. After some time t, it will be, we can find this particle at position 2 here, right? So the path which is traveled by this particle is defined by the velocity vector, right? And velocity is, we all know that velocity is change in position ds with respect to time. So this path, which is the blue line on your screen, is the path followed by this fluid particle and is defined by the velocity vector. So what is streamline? The lines that are tangent to the velocity vectors throughout the flow field are called streamline. This blue path that is being followed by this fluid particle is called streamline. Is it clear? The path followed by a fluid particle is called streamline. In a steady flow, the path followed by a fluid particle is called streamline. So this is a streamline. On your screen, the blue line is representing a streamline. Is it clear? yes, sir. The lines that are tangent to the velocity vectors are called streamline for a steady flow. Now the question may arise, what is steady flow? So steady flow is just like this. We assume this is a line and this is another line. This is point 1, this is point 2. Let's say there is a sensor here which measures temperature. There is a sensor here which measures temperature, T. And there is another sensor at point 2 that also measures temperature. We have, let's say, person A passing through this point 1. What will happen? The sensor will note our value. Let's say the sensor has noted a temperature of 25 degrees C on that person or particle, right? After some time, let's say this reading is termed as at time equals to 0. At situation 2, the person passes after 10 seconds, which is time equals to 10 seconds. The person A passes from here and the sensor again measures the temperature. Let's say this time it is 35 degrees Celsius. Another person B is following this person A. It passes through this point 1. The sensors measures the temperature and the temperature is 25 degrees Celsius. And the person B also passes from here. The sensor again measures the temperature and the temperature is 35 degrees Celsius. And similarly, when a person C passes and then person D passes, and for all the persons, the
Sensor at point 1 is measuring the same temperature, that is 25 degrees Celsius, and sensor at point 2 is measuring the same temperature, and the person keeps on moving from this A, B, C, D, E person goes from these points, and at all the points the temperature is fixed 25 degrees Celsius and 35 degrees Celsius, right? Yes, sir. Okay, so this point, so this flow is termed as steady flow, because what is happening with location 1 and time, there is no change in temperature at this location. With time there is no change in position, there is no change in temperature, and there is no change in temperature with respect to time as well. Is it clear? Yes, sir. So at time equals to 0, all the particles passing from point 1 will be showing same temperature. Similarly, at time equals to 10 seconds, all the particles passing from location 2 will have same temperature. So there is no change in temperature with respect to time, and with respect to position, the temperatures remain fixed. That is, at position 1 it remains 25 degrees Celsius, at position 2 it remains 35 degrees Celsius. So this type of flow will be termed as steady flow. Is that clear? Yes, sir. So if we come onto the figure here, at location 1, all the particles that will pass from this location 1 should have same properties. It is not the temperature, it can be velocity, it can be pressure, it can be viscosity, it can be gravity. Gravity is a constant, so it can be volume, it can be any density, it can be any property. So all the particles passing from this point 1 should have same value of velocity. Let's say it's 10 meters per second here. All the particles that will pass from this point 1 should show velocity of 10 meters per second. Then this flow would be termed as steady flow. And all the particles passing through this point 2 should also show the same velocity value, let's say 20 meters per second. So all the particles will be indicating 20 meters per second that will pass through from this point 2. So this flow will be termed as steady flow. Is it clear? What is steady flow? Yes, sir. Any question in understanding of the steady flow? Any confusion? Clear, sir. Okay. If it is clear, now we have understood, okay, G, velocity is responsible for defining the path of the particle, and the path followed by the particle is called streamline. But the issue here is that if we see, the position or the path of the particle is continuously changing, right? Yes, sir. And that is too changing that along a single path, along a single streamline, the path is also changing. And when we move from one streamline to the other, that is n equals to 0 is the first streamline and n equals to n1 is the second streamline. Then in the second streamline, there is also change in path. The second streamline is, in another way, it's another streamline. It has also its own path. So we need to define a coordinate system that simplifies our problem. Because if we start defining the position with respect to xz coordinate, let's say we simply want to define the position using the xz coordinates. So for this particle at location 1, we will need one coordinate. At another position, let's say 2, we'll need second location coordinates. At the third point, we'll need another coordinate. And if we jump from one streamline to the other, all together we will need other angles and other coordinates. Okay? Is it clear? So the problem is not that much simplified. So we want to eliminate that position system. So what we do, we take the particle and we define
two coordinates on this particle. One is along this particle or along the streamline, which we call as S, and other is normal to this, that is called normal to the streamline. So we have defined a new coordinate system, that is SN coordinate system. S is parallel to the streamline and N is normal to the streamline. So whatever happens, if the position is changing, we know that this S will account for that. And if the streamline is changing, the normal component will account for that as well. So is it clear the use of the new coordinate system? Yes, sir. Just to simplify our problem. So if we define velocity as change in position, that is the distance traveled along the streamline, right? Velocity is distance traveled along the streamline. So velocity would be equal to d. S is the distance traveled along the streamline, ds by dt. Now velocity is function of s, right? The s coordinate, right? And s is function of time, because s is changing with time. And we also know that velocity is function of time as well. Is it clear? Yeah. Velocity is function of s and t, and s is itself function of time. So if I want to calculate acceleration along the streamline, what I will do, I will just simply take differential of the velocity with respect to time. That is differential of this derivative of this velocity with respect to time. Clear? Yes, sir. So how Yes, sir. will this derivative be defined? Because the sub parameter or the sub function is also function of the s is function of the time as well. So we'll just be applying chain rule. What we will do, we will take differential of velocity, partial differential of velocity with respect to time, and because s is also dependent on time, we'll take differential of velocity with respect to s, right? Yeah. Clear? Yes, sir. Sorry, I was writing, sorry, here I've written not the velocity, differential of s with respect to time. Here, partial s by partial t into partial v by partial s. Clear? Yeah. Yeah. So partial s by partial t is basically velocity, and this is partial v by partial s. In dynamics, you would have studied this sort of equation along the normal and tangent components, anti-coordinate system. Here that is along the streamline and normal to the streamline. So from this, we know that acceleration along the streamline is dependent upon two things. One is change in position with respect to time, and the other is change in velocity with respect to position, right? Yes, sir. Do you understand that? So what this is telling us, if I say the fluid is not accelerating, if I say the fluid is not accelerating, which means AS equals to 0, right? So if we have particle at this point, let's say 1, if the particle is at this position 1 and the particle is not accelerating, it means it is moving with uniform velocity, which means this derivative would be equal to 0. Partial v by partial s would be equal to 0. There will be no change
in direction as well as magnitude, right? So it will be moving in a straight path. Clear? Yes, sir. So the flow pattern should look like these straight lines for AS equal to 0. Clear? Yes. And if I say AS is greater than 0, what would be the flow pattern look like? This Upward. means that this should be positive. This should be positive, as well as this magnitude will be multiplied by this positive gradient. So the converging streamlines like this would represent a accelerating flow pattern. This would be AS greater than 0. Clear? So converge क्यों करेंगी? Can you look at this equation? Do you understand this equation for जी, sir. AS? Partial V for AS to be greater than 0. Partial V by partial S should be greater than 0. जी. And this should also be positive. Velocity will be positive as well as partial V by partial S. So it means the path, the gradient or the change in the coordinate axis should be of the velocity should be positive, which is represented by these converging lines. If these are diverging, let's say if these are diverging like this, the gradient partial V by partial S would be Negative. less than 0. Sorry, less than negative, right? जी. समझ आ रही है बात? So लेकिन देखो वो जैसे एक लाइन ऊपर जा रही है लेकिन दूसरी लाइन नीचे जा रही है. तो एक का पॉजिटिव ग्रेडियंट है, एक का नेगेटिव है. इस तरह नहीं होगा कुछ? No, it's the जो फ्लैट लाइन के ऊपर है एक वो उसके ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन जो फ्लैट के नीचे है. if the flow is like this, along the streamline coordinate would be this, right? जी. And this would be normal to the streamline. जी. So for this, the slope would be पॉजिटिव. positive or negative. अच्छा नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की नेगेटिव. ठीक है? जी समझ गए. And for another case where the initial position is like this. This is point 1 and point 2. Initially, this is this situation, right? From this position, the particle has moved to this point. Again, for this situation, partial V by partial S would be negative. Clear? जी सर. So velocity is positive, but partial V by partial S is negative. Okay. So for AS to be negative, one of the components should be negative. For AS to be positive, both of the components should be negative or both should be positive. ठीक है? The magnitude as well as this direction. समझ आ गई बात? जी सर. For acceleration, you should have also studied another component in dynamics. That component was normal to the streamline, right? AN. जी सर. And you would have written it as equal to what? क्या होता है जी normal to the stream? V square V over square by R. V square is the magnitude of the velocity and R is the radius of curvature of the path. ठीक है? So for the straight path, radius curvature is infinity. Infinity. So normal acceleration would be 0. So in this case, AN would be 0, right? जी सर. Here in the next path, in the second situation where AS is greater than 0, here AN would be 0 again. Why? Because the path is still straight. There is no radius of curvature. The radius of curvature is infinite.
ठीक है. जी सर. So these are the two situations where as and an equals to 0 and here as is greater than 0. When the path or the streamlines are curved, then an equals to greater than 0. But in this situation, as would be 0, right? as क्यों 0 होगा बता सकते हैं? वो इक्वली स्पेस चाह रहे हैं, यानी कि ना कन्वर्ज करें ना डाइवर्ज करें. So there is, but that's not the rule. The understanding is behind this should be this equation. As equals to v by v into partial v by partial s. तो as क्यों 0 होगा इसमें? कांस्टेंट चेंज नहीं है. जी बता सकते हैं as 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर इसमें कन्वर्जिंग नहीं हो रही है. और कन्वर्जिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब as 0 होगा. जी बता सकते हैं as 0 होगा कि नहीं होगा इस सिचुएशन में? होगा तो सही सर. 0 होगा. जी. On a circle, if I draw a tangent line at one point, will it remain tangent at all the points? नो सर. Will it be the same tangent? नहीं. ये partial v by partial s है क्या, मुझे बता सकते हैं? अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं, this is streamline and this is normal of that streamline, and the velocity is along this streamline coordinate. तो partial v by partial s क्या हुआ? सर ओनली वेलोसिटी का डेरिवेटिव, इसका s का If I want respect to to s. draw it, if I want to draw it on this coordinate system, तो कौन सा वेक्टर बनेगा ये? अगर आप कह रहे हैं कि आपको इक्वेशन समझ आ गई है, अभी मैंने पिछली स्लाइड पे एलैबोरेट भी किया यहाँ पे कि ये पार्शियल v बाय पार्शियल s 0 क्यों होगा और पॉजिटिव क्यों होगा, ग्रेटर क्यों होगा. तो व्हाट डज दिस मीन पार्शियल v बाय पार्शियल s? जी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेडियंट. मैथ्स भूल गए हैं. सर स्लोप. स्लोप किस चीज का स्लोप? सर किसी भी लाइन का. ठीक है, लाइन का स्लोप. तो स्ट्रेट लाइंस के लिए मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ? चेंज 0 है. स्ट्रेट लाइंस का स्लोप सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर देखें तो स्लोप 0 ही होगा ना. एक्स एक्सिस से निकलना है थोड़ी देर के लिए. अच्छा सर. स्ट्रीमलाइन एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स देखें, इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर बात करें, एन एस के अंदर. पार्टिकल मोशन पढ़ ली है ना डायनामिक्स में, यस सर. और ये इक्वेशन वहां बड़ी डिटेल में पढ़ी होगी, ऐसे ही है. इसको आपने कहा होगा टेंजेंट एक्सेलरेशन AT का होगा वहां पे, राइट? इसको वहां S की जगह T कोऑर्डिनेट का होगा, ऐसे ही है. सर मैंने भी सही तरह रिवाइज नहीं किया वो. ओवरऑल पूरी क्लास ने तो देख लिया होगा ना, ये चीज तो पढ़ ली होगी. सर 80 ये टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट का वो कंपोनेंट. टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट, तो वहां पे ये चीज एक्सप्लेन हुई होगी कि पार्शियल v बाय पार्शियल t जिसे आप कहते हैं या टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन कहते हैं, वो क्या होता है? देख ली थी ये जो क्या नाम है ADS इक्वल टू PDV, वो पहले चैप्टर में हमने देखी थी बस, लेकिन इतना इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया था उसे. ये शायद
था, बस पता था कि इस्तेमाल करने से। Okay, this is basically gradient of the velocity with respect to the streamline coordinate, ऐसा ही है। जी सर। आप कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप नहीं होता, ठीक है, तो इट मींस दैट इट शुड बी जीरो, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन है जीरो इस पाथ के अंदर, राइट? पहली जो सिचुएशन है ये, इसलिए एस जीरो कह रहे हैं ना। जी सर। वेलोसिटी तो है इसकी, लेट्स से मैं कहता हूँ कि पार्टिकल जो वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, v हैज इट्स वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे तो v की तो वैल्यू आएगी। तो स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन जीरो क्यों हो रही है? बिकॉज देयर इज नो constant चेंज, velocity है। इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, देयर इज नो स्लोप, देयर इज नो चेंज, तो इसलिए as जीरो, an क्यों जीरो कह रहे हैं? क्योंकि देयर इज नो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस वजह से जीरो हो रही है, पाथ जो वो कर्व नहीं हो रही, स्ट्रेट रह रही है। यहाँ पे as ग्रेटर देन जीरो क्यों कह रहे हैं? सर पॉजिटिव उसका है। जी, यहाँ पे as जीरो क्यों कह रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यू आर सेइंग दिस थिंग इज पॉजिटिव, So velocity increase हो रही है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज होने का मतलब है कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया। अब कर्व पाथ के अंदर, सर्कुलर के अंदर स्लोप हमेशा चेंज नहीं होता, इधर चेंज होते रहता है। चेंज होता रहता है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है, फिर पार्शियल वी बाय पार्शियल एस तो जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है। जी लेकिन मैंने यहां लिखा है कि ए एस जीरो है, क्यों? ये इक्वली सर उस स्पेस्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? इक्वली स्पेस्ड कर्व लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? स्टडी फ्लो। concentric circles. यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये ऊपर वाली फिगर में लेफ्ट पे नो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, जी तो यहाँ पे इक्वली स्पेस लाइन को क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, इट मींस कि ऑल्थो पाथ तो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, बट दैट पाथ इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये जीरो ही आएगा, ठीक है, समझ आ गई बात? डिड यू अंडरस्टैंड इट? यानी उस इंस्टेंट के ऊपर वो जीरो होगा अगर हम वहां पे। Yes, for that particular instant it will always remain partial v partial s will remain zero, ठीक। ठीक है, जिस इंस्टेंट पे जा रहे हैं, तो इसलिए वेलोसिटी फिक्स्ड है हर इंस्टेंट के ऊपर। 10 मीटर पर सेकंड के साथ ये सर्कल घूम रहा है, पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड के साथ ये कर्व पाथ कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल हर पार्टिकल जो वो अपनी उसी फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ठीक है, बट द नॉर्मल एक्सेलरेशन वुड नॉट बी जीरो बिकॉज दैट इज गिविंग द कर्वेचर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन। क्लियर है? जी सर। उसी के साथ वाली अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो वहां पे हमने लिख दिया कि ए एस भी ग्रेटर देन जीरो है और ए एन भी ग्रेटर देन जीरो है, क्यों? क्योंकि अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही, नाउ द वेलोसिटी इज आल्सो अ वेरिएबल दैट इज चेंजिंग विद टाइम एज वेल एज पोजीशन, ठीक है, समझ आ गई? स्ट्रीम लाइन के साथ जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। क्लियर? जी सर। फिजिकली अगर इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूं, वेलोसिटी इटसेल्फ क्या है? वेलोसिटी वेक्टर इटसेल्फ इज टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन, ऐसे ही है। जी पार्शियल v बाय पार्शियल s क्या होगा? उस टेंजेंट का स्लोप, ऐसे ही है, उस टेंजेंट वेक्टर का स्लोप होगा। जी इसका मतलब जो नॉर्मल कंपोनेंट बनेगा आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो पार्शियल v बाय पार्शियल s को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इफ इट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है, समझ आ गई बात? इज इट क्लियर?
समझ आ रही है बात? ठीक है, सर ये AS 0 है, ये दोबारा बताइएगा। लेट मी इस स्लाइड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, एक मिनट। डिस्कार्ड किया हमने, ठीक है, ओके। वी आर प्रेजेंटिंग AS by V partial V by partial S, and we are presenting AN by V square by R. Considering the first situation, this situation we number it as 1. In situation 1, the figure is indicating AS equals to AN equals to 0. AS 0 क्यों है? क्योंकि हमारी velocity constant है. So the derivative of the Velocity constant same है। effect. So the velocity is constant 0 here. It means that acceleration would be 0. Normal वाली क्यों 0 है? Because it's a straight path. The radius of curvature is R is infinite here. Clear? Yes sir। The situation number 2, AS is greater than 0 because the fluid is accelerating in the streamwise direction. Clear? So velocity is not constant. V is not equal to constant. It is increasing. So partial V by partial S will not be equal to 0. इसलिए AS जो greater than 0 आ जाएगा. AN क्यों 0 है? Because again it's a straight path, तो R is infinity, वही apply होगी इसके ऊपर भी, तो AN जो है वो 0 होगा. Clear? Situation 2 भी clear हो गई. Yes sir। Situation 3 पे आते हैं. Situation 3 में again क्या हो रहा है? Velocity is constant, right? इसका मतलब ये चीज 0 हो जाएगी. AS would be equal to 0. AN 0 क्यों होगा? Because radius of infinity की कोई ना कोई वैल्यू है हमारे पास. Radius of infinity has some value, let's say A. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की कोई वैल्यू हमारे पास है, राइट? Yes sir। फॉर द फाइनल केस वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब as तो 0 नहीं होगा. एंड द फ्लूइड इज एक्सेलरेटिंग, डिसेलरेट नहीं कर, एक्सेलरेट कर, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट दोनों हमारे पास पॉजिटिव आएंगे. सो as शुड बी ग्रेटर देन 0. an क्यों 0 है? बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर की कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू और वेलोसिटी भी हमारी वेरिएबल है. तो इसका मतलब लेट्स से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज a, तो an भी ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, समझ आ गई बात? Yes sir, thank you। तो अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, इट मींस देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल. इसी वजह से है ना, पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो उसको एक्सेलरेट करवा रही है, डिसेलरेट करवा रही है, राइट? So in order to understand the fluid dynamics part, we need to understand the nature of the forces acting on the particle. So normally अगर हम बात करें, on a fluid particle there will be these four forces. Force due to the weight, force of pressure, surface tension, viscosity. ये 4 तरह की forces act करेंगी. But in order to keep our problem simple, we will ignore surface tension effects and we will ignore viscosity effects. Here we will discuss a little bit about this viscosity effect, neglecting this viscosity effect. When we neglect the viscosity effect, we term the flow as inviscid flow. Like the assumption we wrote in the Bernoulli equation, we term this flow as inviscid. By inviscid flow, we mean that the viscosity is 0. So do you know any fluid having 0 viscosity? Sir, ideal fluid। That's an ideal fluid. That will be an ideal fluid. So in reality, there is no fluid having 0
viscosity. So this is an ideal assumption. This is an ideal assumption. So in reality, there is no fluid with zero viscosity. So if this is the ideal assumption, and this is not helping us to solve any real world problem, then why are we using it? Why are we neglecting viscosity effects? Why we are neglecting the effects of surface tension? फिर बहुत negligible होगा. Yes, the case may be that the effects of the weight and the pressure forces are much, much greater than the surface tension and viscosity effects. So that's the one reason that we can neglect it. The other reason could be that, okay, for this purpose, if I consider the viscosity or the surface tension, there will be no effect on my results. My results will remain the same. So depending upon the flow situation, we are going to develop a very simple equation which only considers the major forces, that is force due to weight that will always be there, that will play an important part, and the other force that is responsible for the motion of the fluid particle or the fluid body, that is the pressure difference, the force due to pressure difference. So that is the basic forces required. We can always include the effect of surface tension or viscosity depending upon the complexity of the problem. Okay. For inviscid flow or inviscid, there will be no heat transfer. There will be no heat transfer. ये चीज आपने याद रखनी है. Can you explain कि heat transfer क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसमें फ्रिक्शन ही नहीं होगी. There is no heat transfer except radiation. जब भी हम inviscid flow assume करेंगे तो there will be no heat transfer. हीट ट्रांसफर फ्लूइड का होता कैसे है? जैसे भी एक दोस्त ने कहा कि फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा? हीट ट्रांसफर होता कैसे है? लेट्स से दिस इज अ प्लेट, ठीक है, इसके ऊपर से हमारा फ्लूइड गुजरा, इस फ्लूइड का टेम्परेचर लेट्स से 25 डिग्री है और इस प्लेट का टेम्परेचर 35 डिग्री है, इसका 35 डिग्री है, ठीक है, इस प्लेट का टेम्परेचर. एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जब भी फ्लूइड इसके ऊपर से गुजरेगा तो फ्लूइड का टेम्परेचर राइज करना चाहिए. बट इफ वी आर एज्यूमिंग इनविसिड फ्लो, at the end of this plate the temperature of the fluid will remain 25 डिग्री सेल्सियस. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब फ्लो इसके ऊपर आएगा तो हमने क्या पढ़ा था, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन. अगर विस्कस इफेक्ट्स हैं तो जो साथ से बिल्कुल फ्लो गुजरेगा प्लेट के, वो पार्टिकल इसके ऊपर अटैच हो जाएगा. ऐसा ही है, राइट? जब वो पार्टिकल अटैच हो जाएगा दैट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दिस प्लेट, तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा. और इसी तरह जो उसके ऊपर के पार्टिकल हैं वो सारे स्लाइड फ्रिक्शन के साथ स्लाइड करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनाना शुरू कर देंगे. तो हर एडजस्टेंट लेयर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी टिल वो सरफेस तक पहुंच जाए. ऐसा ही है. लेकिन जब इनविसिड फ्लो होगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल लेट से ए आया है, कुछ टाइम बाद वो मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे नया पार्टिकल आ जाएगा बी, वो भी कुछ टाइम बाद फ्लो करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा बी, राइट? तो जब शीयरिंग स्ट्रेसेस ही नहीं होंगी, जब फ्रिक्शन ही नहीं होगी लेयर्स के बीच में, जब लेयर्स अटैच ही नहीं करेंगे खुद को सरफेस ऑफ द प्लेट के साथ, हर बार जो पार्टिकल वो रिप्लेस होता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर का तो मौका ही नहीं मिलेगा. तो देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर एक्सेप्ट विद रेडिएशन. अगर रेडिएशंस हैं तो उनसे तो हीट ट्रांसफर होगा, बट बिकॉज दे रिक्वायर नो मीडियम. बट विद कंडक्टिविटी और कन्वेक्शन इफेक्ट से हीट ट्रांसफर नहीं होगा इनविसिड फ्लोज के अंदर. क्लियर? जी सर. सो नाउ वी नो के स्ट्रीमलाइंस क्या हैं, स्ट्रीमलाइन कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. एक फ्लूइड पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर रहा हो तो उसका क्या मतलब है, उसकी एक्सेलरेशन कौन सी टाइप की होती है, नॉर्मल एक्सेलरेशन कौन सी होती है, स्ट्रीमलाइन एक्सेलरेशन कौन सी होती है. वी ऑल्सो नो कि अगर मेरे सामने स्ट्रीमलाइंस बनी हो तो किस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे ज़हन में फौरन से आनी चाहिए. लेट्स से अगर मुझे पता है कि स्ट्रेट स्ट्रीमलाइंस बनी हुई है स्टेडी फ्लो की, तो मुझे पता है कि उसकी स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, उसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन भी जीरो होगी.
तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट होगी, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। तो स्ट्रीमलाइन पैटर्न या फ्लो पैटर्न मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मुझे ये भी पता है कि एक पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उसके ऊपर कौन सी फोर्सेज एक्ट करेंगी और मैंने कौन सी फोर्सेज सिंपल प्रॉब्लम के लिए कंसीडर करनी है। आई हैव टू कंसीडर force due to weight and force of pressure. So in the next class, in the next lecture, we will be defining the nature of these forces F1, F2, F3, F4, F5 जो आपको नजर आ रही हैं, वो हम डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन दी प्रेशर फोर्सेज एंड दी वेट फोर्सेज। इनमें से कौन सी प्रेशर फोर्सेज हैं, कौन सी वेट फोर्सेज हैं और कौन सी सरफेस टेंशन की फोर्सेज हैं, किन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और किन को हम अपनी पास रख रहे हैं, किन को हमने सॉल्व करना है। बेस्ड ऑन दैट वी विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग द स्ट्रीमलाइन एंड normal to the streamline, and with that we will develop Bernoulli equation। जब हम streamline के along apply करेंगे तो जो equation हमारे पास आएगी that is called Bernoulli equation। जब हम normal to the streamline apply करेंगे तो then we will get another equation, उसका भी एक नाम है, उसको हम कहते हैं Bernoulli equation normal to the streamline। तो उसका क्या रोल है और एक्चुअल Bernoulli equation का क्या रोल है, किस तरह से अप्लाई होती है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर?